Ideally, it would be better that don't take a risk too much because your family has already taken a risk with you, and start with some established brands. 3, 4, 5 years down the line, थोड़ा पैसे जमा कर लो बॉस अपने अकाउंट में, उसके बाद में टेक द रिस्क ऑफ गेटिंग इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप. वो ऑटो पायलट पे सिस्टम स्टार्टअप्स में चलते नहीं है, वो हमेशा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है. वो पर्सपेक्टिव अगर आपको चाहिए कि सिस्टम कैसे बनाएं जो ऑटो पायलट पे चले. कल में 10 दिन अगर राहुल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे नहीं कैटकिंग नीचे बंद हो जाएगा. वो सिस्टम ऑटो पायलट पे चल रहा है. ऑल राइट, हाई एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड. यार बिजनेस स्कूल तक तो लाइफ बहुत अमेजिंग होती है, सब कुछ सेट होता है, प्लेसमेंट के लिए आपके सीनियर आ जाते हैं, प्लेसमेंट कमेटी होती है, नौकरी लग जाती है अगर सीजन सही हो. अभी सीजन ओके चल रहा है, बट हाउ टू लिव लाइफ आफ्टर अ बिजनेस स्कूल, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता था. टुडे आई एम गोना मेक यू एन IFT alumni. विशाल सर, हाय सर, वेलकम ऑन बोर्ड. हाय, थैंक यू. सर इज अ ग्रेजुएट आउट ऑफ IFT, उसके पहले अंडर ग्रेजुएट में गोल्ड मेडलिस्ट, देन इज लिव्ड हिज लाइफ in what all brands you swear by. You drink Pepsi, Dabur ka real juices, or Coca-Cola of the world. You drink or you don't drink, but yeah, that's the question. I'm a big fan of Coke. Still, I know it's unhealthy, sir. I won't say that. You won't say that. But the good thing is, sir is the CEO of Woxsen University right now in Hyderabad, which is doing really amazing. उसकी बातें हम करेंगे बाद में. But let's talk about, sir, you graduated out of IFT in which year? 2001. वाओ सर, ये रहा 20 से लेके 25-24 साल के बच्चे हमारी बातें सुन रहे हैं, इनको एक करियर ज्ञान दे दीजिए. यू हैव चेंज करियर फ्रॉम डाबर, FMCG, पेप्सी, बेवरेजेस, कोका-कोला एंड देन पेप्सी. आई वाज डूइंग माय रिसर्च एंड देन नाउ एजुकेशन. तो सर क्या करियर एडवाइस है टू पीपल हु वांट टू बी ग्रेजुएटिंग आउट ऑफ बिजनेस स्कूल्स? A very difficult one, tough one, because as I say, Rahul, you know, every career is very different. Every journey is very, very different. There is no golden rule which is there for anyone. So I don't know how I should be handling this question as such, because they would be charting their own journeys once they are out of the B school and all of that. सर इनको आपकी जर्नी चाहिए, आपने सब ड्रीम जॉब्स करी हैं, वो अपना जर्नी बता दीजिए. आई नो यू बीइंग डिप्लोमेटिक, बट वी जस्ट वांट टू हियर योर लाइफ स्टोरी एंड योर स्किल्स, दैट्स इट. Okay, so for me, I think what was very important was that fundamentally 2-3 चीज़ें देखनी है लाइफ के अंदर. पहली चीज़, pick up a great brand, iconic brand, great brand, because they will hone you, they will polish all the rough edges for you and make you desirable, make you the wanted commodity in the corporate world. Nice. That's one. वहाँ पे सर काम कुछ भी हो. अच्छा, नेक्स्ट चीज वही है. एग्जैक्टली. अच्छा. नेक्स्ट थिंग इज, व्हेन यू हैव अ ग्रेट ब्रांड विद यू, डू एज मेनी डाइवर्स रोल्स एज पॉसिबल. डोंट स्टिक योरसेल्फ ओनली इन वन रोल. अब काम कोई भी हो, यू वर्क ऑल ऑफ दोज रोल्स. आई हैव वर्कड वेयर माय फर्स्ट जॉब वाज गोइंग विद द रूट सेल्समैन इन द ऑटो एंड पिकिंग अप ऑल दोज खाली झूठी बोतलें फ्रॉम द मार्केट. Really? Yeah, that is. And people say, you know, working in Coke and Pepsi is very glamorous. No, where is the glamour? I don't know. Where is the glamour? You are there standing at a pan bidi outlet, picking up those jhoothi bottles along with your salesman. खाली तक तो ठीक था, जब आपने झूठी बोतल बोला ना, that hit me here actually. But that is what it is. Yeah. Oh, that's what the fact is it not? Somebody having a fag and having a bottle of cold drink along, and you are picking up those empty bottles from there. And those are jhoothi only, isn't it? बिल्कुल. Glass bottles चलती थी ना वहाँ. Of course, sir. Of course. अभी चलती है glass bottles. So the roles are very, very important. Diverse roles. So got a great brand. Now look for diverse roles. That's the second thing. Third is maximize and absorb as much of learning as possible from all the stints which are possible there for you. And then look for money. Don't look for money. In the first 20,000 hours of your career, which is roughly about 8 to 10 years, by the way, stop looking for money. Don't do it. Seriously, sir? Seriously. Sir, तब तक money will follow you anyways. Is it? Money will follow. Sir, तब तक मैं 30 साल का हो जाऊंगा. मैं इनकी एज ग्रुप को, I'm feeling young today, so I'm representing them. So 30 साल 32 साल का तो हो जाऊंगा. अब तब तक पैसा, तभी तो पैसा चाहिए. They've got a girlfriend, they've got a motorbike, plan to buy a nice car. नहीं? Are you looking for 50, 60, 70K
1 lakh, 1.5 lakhs right now, or you're looking at big money eventually, which is going to be running into multiples of lakhs per month? What is important in your mind? GenZ बोलेगी सर अभी 50-60 रहेगा. GenZ बोलेगा अभी मेरे को 10 लाख रुपया per month दे दो. Of course, that is not going to happen. That is not going to happen, right? So I think the richness of your profile comes out of the great brand when they hone your rough edges, and when they polish them well with the diverse roles. You get and absorb all that learning which is there, and then you're ready for the bigger roles and bigger challenges in life and career. So I would like to a little bit digress here. So अभी तो startup world भी चल रहा है. There's Zerodhas of the world, Paytms of the world. You know, when I was growing up as in doing my MBA, so Flipkart came in India. You know, Myntra was just coming in, and Jabong bought out हो रहे हैं. Everyday newspaper में आ रहा है कि you know कि every order which Flipkart ships, they make losses. And Zomato started to pick it up. People were talking about Zomato. Oh, तो थोड़ा late आया. Swiggy came in. Swiggy started delivering. Zomato copied the whole thing. I've seen this entire generation coming. Zerodha came in right now. So past decade has been like this. Where we talk about like my ex company GE or your companies Dabur, Pepsi, Coke, or like multi-billion dollar giants. Startup में काम करने में सर exposure नहीं है क्या? बिल्कुल है. I wouldn't say that the exposure is not there once you're working in the startups, but you should be ready that you are going to be out there in non-glamorous jobs where anything and everything has to be done by you. You have to roll up your sleeves. You have to walk the market. You are going to be the CTO. You are going to be the CEO. You are going to be the bloody executive also. And sometimes you have to be mopping the floor also. So please understand that. If you are all prepared and well sorted in your mind that this is what I want and I want to be in it, and yes, eventually I'm going to make some big money or big bucks out of it, then go for it. Then go for it. So there's a leap of faith which is required. You have to have that perseverance and patience. Some of them don't have that. True. And some of them really have that, and they want to really, take those risks in the early years of their career. Got it, sir. So दो path हैं अभी इनके पास. Assuming these are some people are going to go to IIM Ahmedabad, कुछ SPJain बॉम्बे जाएंगे, कुछ IFT जाएंगे, आपके जूनियर्स बनेंगे, कुछ वॉक्सन में के अंदर आपके साथ पढ़ रहे होंगे. तो दो चार्ट है. एक तो मैं स्टार्टअप ज्वाइन करूँ. स्टार्टअप मतलब IIT, NIT, बिट्स का बंदा है, IFT का बंदा है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का बंदा, आपकी यूनिवर्सिटी का बंदा, जिसने स्टार्टअप खोलिए, उसके बाद काम करूँ 2-3 साल के अंदर स्टड बन के, एंड देन आई बिकम अ वर्क इन अ बिग कंपनी लाइक गूगल, गैप्स ऑफ द वर्ल्ड, जीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑल जीज. और फैंग्स बोल रहे हैं आजकल फैंग्स का मैंग्स हो गया है, राइट? सो मेटा हो गया वो. और अदर इज स्टार्ट विद फैंग्स, पहले अमेजॉन मिल जाए नौकरी तो यहाँ स्टार्ट करें, फिर बाद में स्टार्टअप करूँ. किसमें आपको लगता है कि डाउन द लाइन फर्स्ट 20,000 आवर्स में पहले जो कुछ हज़ारों घंटे हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा? See, very tough question if you really ask me, because there is no straight jacketed answer for this. ठीक है, हर एक की situation अलग है. Now, for example, if somebody is from a little bit of a modest family and they have already spent quite a bit of their life savings on getting their MBA done, and they're looking for a great payback eventually, ideally it would be better that don't take a risk too much, because your family has already taken a risk with you, and start with some established brands. 3, 4, 5 years down the line, थोड़ा पैसे जमा कर लो बॉस अपने अकाउंट में, उसके बाद में take the risk of getting into the entrepreneurship and join that bandwagon of entrepreneurship. Some are different, who say I want that risk, I want that kick, and I want that accelerated learning. So accelerated learning will come from the startups, right? Where you will be doing a lot of things at the same time. आप मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे हो, ऑपरेशंस भी खुद ही कर रहे हो, सप्लाई चेन भी खुद ही देख रहे हो, रिसेप्शन में भी समटाइम्स यू आर ओनली सिटिंग, राइट? एंड देन वर्किंग द मार्केट ऑल्सो अलॉन्ग विद योर एग्जीक्यूटिव्स एंड ट्राइंग टू गिव देम द ऑपरेशनल ज्ञान एज वेल एज बैलेंसिंग इट विद द स्ट्रैटेजी. So you are running from the boardroom to the reception desk and then mopping the floor also, right? So if this is the job which is cut out for you and you are okay to take that kind of a risk because your family background is pretty stable and you're fine with it, and your priority is more about not money but accelerated learning, then startup karo yaar. That's good. Yeah, great. That's a great perspective, sir. You remind me of my college days. तो अपने को सब काम खुद ही करने. तो मैं SPJain के अंदर क्लास लेता था. तो क्लास में SPJain भवन कैंपस के अंदर अंधेरे में वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है. तो क्लास में जाके रूम पर रेंट 200 रुपये पर घंटे में रूम मिलता था. आई शुड डू दिस वर्कशॉप्स के 5 डेज के अंदर हम आपको एक पावर पैक पूछ देंगे कैट के अंदर, महाराष्ट्र सीट एग्जाम होगा उसके अंदर. एंड बट बच्चा अंदर घुस रहा है तो उसको एड्रेस नहीं पता है.
So I should take those printouts of the arrows first of all. Arrows, CATKing workshop उधर. फिर arrows भी दिमाग लगाना है. ये arrow इधर लगा है तो अगला arrow इधर जाएगा. फिर first floor से जाके इधर लगेगा. उल्टा भी नहीं होना चाहिए. So building all those arrows up there. तो वो खुद ही करना है. बाइक पे अंदर मैं मुझे आगे फेविकोल लगाता था. प्रिंट नेविगेशन. प्रिंट नेविगेशन. क्या करेंगे सर, बच्चा बचाना अंदर. वो कर करके बाइक पे जा जाके फिर दोबारा चेक कर देना है. रास्ता मिल रहा है. अब एरो उल्टा हो गया. शिट. रूम नंबर 220. फिर रूम नंबर कौन सा है? वो लास्ट में बोलते थे. गार्ड बोलता था 220 आज आपका. तो थोड़ा पहले बता, मैं प्रिंट तो लगाऊं. देन सेकंड राउंड विद अ पेन 220 हर जगह जाके लिखना है. वाह. टीचर भी खुद ही. अब बच्चों से फीस भी कलेक्ट करनी है. वेलकम टू एंटरप्रेन्योरशिप. वसूली भाई भी खुद ही है. तो पहले तो शर्म आती थी. टीचर भी मैं हूँ यार. पहले उनसे इशू चार्ज लाइक मिनिमम 500 रुपए फॉर द 5 days वर्कशॉप. 1000 रुपए. तो वो भी खुद ही कर रहे हैं. पहले टीचर खुद ही बाहर बैठ के इमेजिन करो पैसे काट रहे हैं और खुद ही जाके पढ़ा भी रहा है. वो हालत थी. फिर मैंने थोड़ा सा बच्चे से दोस्ती हो, जो पहले आता था उसको बिठाता था मैं. वहीं पे मिले हैं उसी दिन वर्कशॉप में पहली बार. यार एक काम करेगा, बाहर थोड़ा पैसा कलेक्ट कर लेगा. वो बच्चा बाहर बैठ के पैसा कलेक्ट कर रहा है. दैट्स हाउ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टेड. तो स्टार्टअप में लर्निंग तो बहुत है. नो डाउट इन दैट. आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन टू दिस. सर स्टार्टअप ज्वाइन करना 2 साल, देन जी और देन पेप्सी और देन कोक, या जी पेप्सी कोक देन स्टार्टअप में ज्वाइन करना, खुद का धंधा नहीं कर रहे हैं, विच वन विल बी मोर रेलेवेंट? दोनों में लोग अच्छे. स्टार्टअप में तुम्हें IITian, NITian, बिट्सियन, IFTian मिल रहे हैं आपके साथ, अच्छे लोग मिल रहे हैं. ऐसे अर्ली ऑन अगर एपेटाइट है उतनी रिस्क की तो स्टार्टअप ज्वाइन कर लो पहले. अर्ली ऑन स्टार्टअप ज्वाइन कर लो इफ़ यू हैव द रिस्क एपेटाइट एंड यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क. बट अगर अर्ली ऑन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है दैट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, हाउ ब्रांड बिल्डिंग इज डन, हाउ प्रोसेसेस वर्क, हाउ द सिस्टम, वो बोलते हैं ना सिस्टम ऑटो पायलट पे चल रहा है. वो ऑटो पायलट पे सिस्टम स्टार्टअप्स में चलते नहीं हैं, वो हमेशा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं. वो पर्सपेक्टिव अगर आपको चाहिए कि सिस्टम कैसे बनाएं जो ऑटो पायलट पे चले. कल में 10 दिन अगर राहुल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसे नहीं CATKing नीचे बंद हो जाएगा. वो सिस्टम ऑटो पायलट पे चल रहा है. सो हाउ डू यू run Oh, such you're saying kind we are a of... big organization? No, I'm saying that We are a you are a startup. great organization, but I'm saying when you build that kind of a setup, Yeah. I Right? wish. and you are away, and that does not take a beating on your business. That you learn from. That you learn from established brands. That's a very, very different perspective, which only an established, bigger brands, legacy brands will be able to give you, because they would have set up the systems, processes in such a way where it is already on autopilot. Right? So it depends. मेरी नीड क्या है यार, मेरी लर्निंग की भूख क्या है आज की. आज मेरी लर्निंग की भूख अगर ये है कि मेरे को चाहिए सब कुछ समझना है आज ही और रिस्क कुछ नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट द रिस्क, आ जाओ स्टार्टअप में यार. बहुत ही बढ़िया सर. आपने बिल्कुल मैं एक एनालॉजी था तो मेरी एक्सपीरियंस से जी से आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है मेरे से. सर जी में आई वाज अ स्मॉल cog in the entire wheel of the entire, imagine the whole wheel system is going on and you're just one pulley in here, somewhere sitting in Bombay or in the US or in the China, or sometime you're here, sometime you're here, sometime you're here. So I traveled like 25 countries at that time, all G expenses paid. तो कभी ये फिक्स करेगा, कभी ये फिक्स. तो in the entire journey I learned everything, how this bloody machinery is working. But एक और key है राहुल. This reminds me of one very earlier in my career I heard this. Do you want to be a big fish in the small pond, or you want to be a small fish in the big pond? That question you need to ask yourself, what works for you? And both are great, by the way. Both are great. वो small cog है और important है, but that pond is very, very big. Or you're in your own startup where the pond itself is very small, but you are the biggest fish there. True. Which one you want? You got to answer. Same question I asked in my blog post, which I write in SPJain Bombay. उसके अंदर ही same saying है. I'll send you the link. The question is whether you want to be the big fish. Same thing, sir. अच्छा. I'll send this to you. About 15 years back. Nevertheless, tough question, sir. But yeah, if students can answer this thing, that's great. I personally feel brand makes you branded. Yeah. When I was in G, it was like G. Oh, you work for G. US embassy जा रहे हैं, visa करवाने. You get respect, you get stature. Oh, yeah. But Calm was good in the start. It was a leadership program. But yeah, G makes me good for
Google, it makes me good for Facebook, etc. etc. Startup makes me good for a different breed altogether. Yeah. तो मेरे ख्याल से अब जब कैटकिंग करने के बाद अगर मैं वो जी वाला रोल अप करूँ ना, मैं तो फाड़ दूँ सर. I was doing very good, ऐसा नहीं है. I was reporting to CIO G India every year, awards पे award, but I don't think, maybe we were kids or fresh out of college, etc. Yeah. और अब ये सब करने के बाद मुझे लग रहा है अगर, बट ये खतरा है कि स्टार्टअप करने के बाद तुम्हें जी लेगा कि नहीं लेगा. Because G etc. has a leadership program, and now HUL, PNG, Coca-Cola, MT programs. That risk is there. That risk is there. That risk is there. But long run, I think startup then big companies would be helpful. That makes sense. That makes sense. It is a perspective again. फिर कभी कभी तुम इतने स्मार्ट हो जाओगे कि तुम फिट ही नहीं कर पाओगे अपने आप को जी जैसी कंपनी में. क्या बोलते हो सर? Down the line, see, if you have already done about 10 years, 12 years in your own startup, and you have failed and you have started a new organization again and all of that, तो तुम्हारे 3 फेलियर हो गए हैं, चौथा सुपर सक्सेस हो गया है, उसके बाद your whole personality itself will tell you, I don't want to be in that big pond, you know. True that. I don't want that. I love this where I have failed and now I have seen the success. This is the so initial years of my tasting of that success. Now वो blood लग गया है ना, अभी उधर नहीं जाना है. I want to be the boss. I want to be the one who should be on the driving seat. Awesome. Sir, अभी जब when you were an IFT and now you're running the show at Woxsen, हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं यहाँ पे, कितने साल हो गए ग्रेजुएट आपको हुए और यहाँ से भी यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं. डू यू फील सेम वाइब एज द ओल्ड किक ऑफ स्टूडेंट्स? मतलब आपको लग रहा है कि आई एम नॉट लाइक क्वेश्चनिंग द Woxsen स्टूडेंट्स वर्सेज IFT, ऑफ कोर्स इट्स एन ओल्ड यूनिवर्सिटी, अलग होगा, बट आजकल की जनरेशन के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो से भी लीव Woxsen, आई रिप्रेजेंट SPJain बॉम्बे एंड यू डीलिंग विद दीज स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहे हैं? स्टार्टअप वार्टअप कर रहे हैं ये कि जीवी जा रहे हैं, इनका क्या थॉट? I'll give you a perspective in this. See, the newer generation, forget about Woxsen or IIMs, we are also among the same top league institutions, but GenZ's का जो वो mindset है ना, वो different हो चुका है. It is agnostic of which institution you are in. Okay, I'll tell you an example. I'll give you the real sense that what these GenZs are thinking today. One, they are fully exposed than what you and me were. Yeah. At that point in time. Totally. Because they're so much exposed by the digital explosion which has happened around us. They know anything and everything around what is happening and what they want to do. Their aspirations are insurmountable. They want to be, मेरे को 5 साल में CEO बनना है, मेरे को 5 साल में CXO बनना है, मेरे को 5 साल में CMO बनना है. That's the kind of aspiration levels they are at, right? The good part is there is a undying hunger which is there in your belly. True. To keep you moving, which is good part. The bad part is that you see a little bit of a sense of entitlement कि अरे यार ये तो मेरे को होना ही चाहिए, 5 साल में मेरे को तो CMO बनना ही चाहिए. But the practical world works slightly differently. So you get the real picture of it once you're out there in the market and then you start working and then you figure out, बस मेरे से ऊपर भी धुरंधर बैठे हुए हैं, so शांति वो भी अभी कतार में, then they feel वो कतार में हैं, तो reality check वो बाद में आता है फिर. बिल्कुल. So GenZs are definitely very very high on aspiration levels, but my caution to them only would be that don't have that sense of entitlement. Work hard towards. We have arrived. Woxsen, we've arrived. Just because you are from a premier tier institution, it doesn't give you entitlement that you're going to be a success in your career. Right? And that's where I think somewhere that whole transition comes. ना वो होता है ना, लोग मैं प्रीमियर टियर इंस्टीट्यूशन से मैं लीडरशिप रोल पे पहुंचूंगा सीधा. मेरे को सीधा पहुंचना नहीं, वो लीडरशिप पे पहुंचोगे नहीं आप. टाइम लगेगी. पहले सर की तरह तुम्हें डाबर में क्या बेचते थे ना, कवच नहीं बोल रहे, some of those चूरन लवन ने बाहर कर चूरन बेचना पड़ेगा, फिर पेप्सी में काम करना पड़ेगा, कोका-कोला में काम करना पड़ेगा, ट्रकों में बैठ के फैक्ट्री में बैठ के डिस्ट्रीब्यूटर के बाद, और फिर तुम जाके CEO बनोगे. सर ने बहुत कुछ बड़ा कुछ किया हुआ है, वो बातें हम बाद में करेंगे. बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू गाइस एंजॉयड दिस डिस्कशन. इफ यस, डू इट इन द लाइक बटन. और तुम मुझे बताओ यार, व्हाट इज द करियर पाथ इज द बेस्ट? पहले स्टार्टअप ज्वाइन करें कि एक बड़ी कंपनी मौका मिले तो उनके साथ ज्वाइन करना चाहिए, या पीपल वाचिंग दिस वीडियो इनसाइड द बी स्कूल्स, आप भी मुझे बताओ यार, तुमने क्या लाइफ के अंदर किया, व्हाट वर्कड फॉर यू, दैट्स गोना बी ग्रेट हेल्प. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. हम्बल टू एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. टेक केयर. बाय बाय.